हाय एवरीवन, दिस इज लजीना। हाय एवरीवन, दिस इज हेनरी। और जैसा कि हम लोग आपके साथ अच्छी मज़े की रेसिपीज शेयर करते हैं, तो आज फिर हम लोग लेके आए हैं आपके साथ शेयर करने के लिए एक मज़ेदार सी, सादा सी, आसान सी रेसिपी। वो है चिकन कढ़ाई। जी हाँ। और जैसा कि अक्सर लोग सोचते हैं कि कढ़ाई के लिए बहुत सारे टमाटर चाहिए, तो अगर कहीं पे टमाटर ना हो या एक दो टमाटर हो या बहुत एक्सपेंसिव हो, तो फिर वहां पे क्या किया जाए, आज हम आप लोगों को इसका सोल्यूशन बताते हैं। तो आए मिलके बनाते हैं चिकन कढ़ाई। I'm taking one whole chicken, which is about 1.5 kg, tomatoes, onions, ginger and garlic paste, 1 cup of yogurt, 1 tablespoon of cumin, 1 tablespoon of dry coriander, 1 tablespoon of crushed chili, half teaspoon of black pepper, half teaspoon of turmeric, 1 tablespoon of red chili powder, and salt according to your taste. I'm taking 3 tablespoon of butter, and then I'll add 1 tablespoon of olive oil, which will prevent the butter to burn. And as it melts, it's time to add the ginger paste, 2 tablespoons, and then 2 tablespoons of garlic paste. Stir it and cook it less than a half minute. Don't burn it. Now it's time to add the chicken. When you add the chicken, let the chicken cook on medium heat until the water dries. Don't add anything. As you see, the water is completely dried. Then it's time to add your spices. You see, the water is all dried. Now add the spices and fry with the spices less than a minute. Then add half of the grounded coriander and cumin just for 30-40 seconds. And now you can add your onion. I just used 1 onion because I don't want too much onion in it, but I showed you 2 if you want more onions. Cut the tomato into half and put the yogurt in it, and then we will cover it. Lower the heat, cover it, and after 10 minutes we are checking. The tomatoes are soft and we can remove the skin easily. Now mix the chicken with all those green ingredients and higher the flame. Now it's time to cut the green chili. I'm taking almost 10 to 12 chilies, and then cut the ginger like this. It's the julienne cut, very small thin slices. And it's time to add paprika, half teaspoon of paprika. It will give a beautiful bright color to your dish. Let it cook for almost 15 to 20 minutes. As you see, the water is all dried. It's done. Now add the coriander and cumin in it. Put some of the chili and ginger. We will leave some for the garnish. Turn off the heat, and it's time to serve. हाँ जी, फिर हम दोनों आपके सामने आ गए खाना मजेदार लेके, और वो है, और कढ़ाई तैयार है। बस अब इंतजार है कि हम लोग जो है जल्दी से इसको ट्राई करें, आपको बताएं। लुजीना लो आप पहले। और आप ले। ओके, ये ये देखो जी, हम लोग रोटी ज्यादा पसंद करते हैं, आप लोग ओए नान के साथ, होए नान के साथ भी खा सकते हैं, साथ में जो भी आपका दिल करे, सैलेड वगैरह कुछ भी, तो आप उसको ले सकते हैं। प्लीज, थैंक यू। हाँ, मैं पहले ट्राई करके देखूं, तो मेरा बड़ा ही कोई फेवरेट। हेनरी
को बहुत ज्यादा जो है ना जल्दी होती है खाने की। और वैसे भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है तो आई कैन वेट। ओके 1 2 3 You would love it. It is really good. हो आप लोग ट्राई करेंगे तो आपको भी ऐसे मजा आएगा जैसे हमें आ रहा है। तो प्लीज कमेंट्स में बताइएगा कि आपने अगर ट्राई किया तो कैसा लगा। Thank you very much for watching our videos. Keep subscribing Liking and sharing. Thank you. Thank you.